Hello and good morning to all of you. I welcome you all to the Alpha S Academy detailed current topic session, and we will discuss a very widely discussed topic and a topic which is in current these days, that is the corporate governance. Okay, so we'll start by discussing what is governance. So, in layman terms, if I say a definition, the definition of governance is that governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not. अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं मतलब किसी भी एक प्रोसेस या एक कोई भी प्रोसेस जिससे कि डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है या नहीं करना है, किस फॉर्म में डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक लेमन टर्म्स में गवर्नेंस कहते हैं. नाउ अर्लियर वी यूज्ड टू हैव द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, जो कि सरकार करती है. भाई हम देखते हैं, हम कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की गवर्नेंस अच्छी है, या एक्स स्टेट में वाई चीफ मिनिस्टर जी की गवर्नेंस अच्छी है. तो ऑल दैट गवर्नेंस कम्स अंडर द part of public governance. But these days, with the evolution of society, comes new concepts, and now there is a concept called corporate governance. So we'll just quickly see what is the definition of corporate governance. Corporate governance is the combination of rules, processes, or laws by which businesses are operated. ठीक है, ये ध्यान से देखिए इसको. Operated, regulated और controlled. आप कंट्रोल नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड आर बहुत जरूरी है. और बिजनेसेस आर मोस्टली रेगुलेटेड इन टर्म. रेगुलेशन में दो टाइप की होती है. वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल. लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ a broking firm that is in news, that is Zerodha. Now Zerodha will something called as internal checks or internal audits, and it will have a external regulation which is by Securities and Exchange Board of India, established in 1992. So now we have a very beautiful diagram here. We'll just quickly see how this corporate governance structure and processes work, and we shall also compare it with public की क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है. तो लेट्स बिगिन. ये सबसे पहले क्या आएगा आपका. फर्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज. यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में. पीएस जो गवर्नमेंट ऑन पीएसयूज हैं वहां पे भी डायरेक्टर्स मिलेंगे. और ये डायरेक्टर कैसे बनते हैं, क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या कैसा होता है, ये सब आपको कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 में मिलेगा. अब नया कंपनीज एक्ट आ गया, दैट इज 2013 कंपनीज एक्ट. तो ये सब आपको वहां पे मिलेगा. वो उसका इतना नीड नहीं है. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब मैं अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर हम पब्लिक की बात करें तो हम बोलते हैं सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज हो गए, फिर उनकी अंडर सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं. वो एक टाइप की टीम हो गई. तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन में. और वो अपर लेवल के अधिकारी भी जो हो गए, वो एक टाइप के डायरेक्टर्स हो गए पब्लिक गवर्नेंस के लिए. नाउ सेकंड इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ऑफ कोर्स दैट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज इसके बिना तो कुछ चलेगा नहीं. अगर हम लीगल फ्रेमवर्क से किसी भी चीज को बाहर कर देंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म will take the whole world, and we will have a inequality of such kind that nobody can imagine. Second is organizational hierarchy. देखो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है हर किसी में. कंपनीज में भी होती है, पब्लिक में भी होती है. मैंने आपको बताया कैसे जॉइंट सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज पब्लिक में होते हैं. फिर अगर आप इसमें आ जाओ तो सीईओ, सीएफओ, उसके अंडर उनके एम्प्लॉयज, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, टीम लीडर्स. इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है वो कॉर्पोरेट्स में पाई जाती है. मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल आई हैव डिस्कस्ड कि पहले कोई भी चीज आपके अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए. ठीक है, जब आप उसको सही अंदरूनी तरीके से सही नहीं कर पाओगे. भाई बॉडी, कोरोना में भी बॉडी को कब दवाई दी जाती है, जब बॉडी इज अनएबल टू फाइट the infection by itself, then only we give the supplements or the medicine. If it is able to subside the virus by itself, then we do not need it. Same is the fact by the external controls. So internal control is more important than the external control in any kind of governance. Then is transparency and accountability, policies and procedure. अब कंपनीज की अपनी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है. तो ऐसा अगर हल्का सा आप डायग्राम बना दोगे तो आपको इट विल फेच यू गुड मार्क्स. नाउ वी शैल सी व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फर्स्ट वन इज इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ
all stakeholders. भाई आप किसी को भी अनइक्वल फुटिंग पे नहीं रख सकते. विल से सी फर्दर इन दिस डिस्कशन सम एग्जांपल्स जहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ, अनफेयरनेस थी डिसीजन मेकिंग में. तो दैट शुड नॉट हैपन. So there should be equal and fair treatment. Second one is legal, contractual, and social obligations to non-stakeholders must be upheld. We'll take an example by this. For example, there a plant X of a particular company which have a proposition of polluting the water bodies and the air around it will affect the society living in that particular area. So that particular company has the obligation to mitigate the effects of the pollution plus to compensate the people properly. So then again, it's a debate of development versus uh, what do we say? Development versus environment, a long debate. So like this, the we should always take the balanced approach. तो सोशल ऑब्लिगेशन जो होती है वो भी कंपनी को पूरी करनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्चुअल तो जो आपने मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पूरे करने हैं. और लीगल तो ऑफ कोर्स इट शुड कंप्लाई विद ऑल द पॉलिसीज एंड द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड गिवन बाय द पर्टिकुलर रेगुलेटर और द गवर्नमेंट. नाउ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी अगर हम हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है कि जवाबदेही. किसकी जवाबदेही है? अगर ये गलत घटता है तो किसकी जवाबदेही है, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे. बट दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. फेयरनेस, डिवर्सिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. देखो डिवर्सिटी से क्या होता है, अगर हम एक ही आदमी के हाथ में कंट्रोल दे देंगे तो हो सकता है कि देर आर मोर चांसेस ऑफ अ रॉन्ग बीन डन. बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल takes a decision, then it is supposed to be a better one, though sometimes it may turn out that it is not good, but that is the way we go by. And transparency, पारदर्शिता तो हर चीज में होनी ही चाहिए, चाहे वो पब्लिक गवर्नेंस हो चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो. Second, the last one is the organization should define a code of conduct for board members and executives. There is a code of conduct for civil servants. Similarly, there should be a code of conduct for directors, for employees. You cannot resort to kind of unethical practices. Like I work in a data company. I have an access of data which may which is costing around, whose cost is $1 billion in the market. What I do is I take the control of that data and मैंने वो बेच दिया. मैं दूसरी कंपनी जो मेरी राइवल कंपनी थी उसको बेच दिया. तो these are the conditions. और अब उस पर क्या होगा, जैसे 420 का मुकदमा होगा. बट वी डोंट हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. भाई उस बंदे को कॉर्पोरेट ज्यादा अपहेल्ड नहीं कर पाएगा, बट दे विल गो इज दे विल रीच द एप्रोप्रिएट कोर्ट in a case in under the section 420 of the IPC, and he or she will be punished accordingly. Thus, we need a code of conduct for board of members and of course executive, and I would say for employees also. Now, why do we need a corporate governance? First one is to achieve a stronger growth and more inclusive society. Of course, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जो उनकी एक्टिविटीज है वो सोसाइटी पे फर्क डालती ही हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक जो सरकार डिसीजन ले रही है उसी का इफेक्ट सिर्फ हमारी लाइफ पे पड़ता है. द डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर आल्सो अफेक्ट्स अस इन अ बिग वे. Thus, for a stronger growth, example, take the example of Tatas. Why do why they are so respected around the globe? Because they have such a strong respect for the values. They do not resort to the unethical practices, and of course their growth is stronger because their corporate governance is very, very, very strong. And it would also lead to more inclusive society. In fact, if you go to the Jamshedpur, where the Tata Steel plant is located, they have hospitals out there. They have n number of benefits for their employees. So that is how an inclusive society, and the medical expenditure, the daily expenditure comes down for a normal worker, which leads to his or her development. Corporate governance in management is also designed to limit risk and eliminate corrosive elements within an organization. उसका हम एग्जांपल अभी 2 मिनट में देखते हैं. नाउ एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया. ऑफ कोर्स देयर इज अ इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम, उसको हटाना पड़ेगा. ये तो हम पॉलिटिकल उसमें भी देखते हैं, और ये हम
कॉर्पोरेट में भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. इफ यू रिमेंबर सत्यम कंप्यूटर्स, द रामाराजू वॉज द हेड, और उन्होंने पुत्र मोह में कुछ ऐसा कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर शेयर went directly from 127 or 126, if I remember correctly, to 9 rupees. अभी वो दोबारा ठीक हो गया, but that was a failure of corporate governance, and they resorted to many unethical practices. In fact, there were 13,000 ghost employees in Satyam Computers. So this individual control system should be removed. Then nepotism and favoritism. Example, if we take the example of ICICI Bank, the MD Chanda Kochar favored her husband, giving her loans without proper scrutiny and checking of documents, without checking any collateral. भाई अब जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो हो क्या रहा है भाई, बैंक लोन दे रहा है, जब जा रहे हैं चेक करने तो पता लगा कि वहां पे कुछ है ही नहीं कोलेटरल में. तो ये किसका फेलियर है? ये एक गवर्नेंस फेलियर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. इनफैक्ट अब जब हम बोलते हैं कि भाई एक हमने क्लॉज डाला लॉ में कि वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए, तो अब लोग क्या करते हैं कि अपने ही घर की वुमेन्स को डायरेक्टर बना देते हैं. जैसे पब्लिक में प्रधान में होता है, नाउ देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड प्रधानपति इन विलेजेस. द सीट रिजर्व फॉर वुमेन are the women's wives of the persons, or daughter-in-law, or daughter of the person who have a strong political hold in that particular area. So this is same thing happening in the private sector also. Now there are conflict of interest. I gave you the example of the ICICI example. Now unsupportive CSR. So CSR, India is the only country where 2% CSR is mandatory. It is the only country in the world which have a law for corporate social responsibility, and where they put their fund, उसके उस पे भी कोई ज़्यादा checks and balances नहीं है. तो we should think on these lines. Then the last one is partiality in appointment and removal of independent directors. Now there is a clause of independent directors in Companies Act 2013, and there is of course वो इंडिपेंडेंस तो नाम की होती है, वो पहले ही बायसनेस बहुत जगह पाई गई है. मतलब किसी ने अपने दोस्त को, किसी ने किसी को, किसी ने अपने सीए को, ऐसे करके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देता है अपनी कंपनी में, बस जस्ट टू फुलफिल व्हाट द लॉ रिक्वायर्स. ठीक है, वो मतलब लॉ को ट्विस्ट कर देते हैं. वो कहते हैं कि लॉ बाद में बनता है, उसको तोड़ने के तरीके पहले आ जाते हैं. सो we should not do that, and we should think on a different line. Now we'll just quickly conclude and see what is the way forward. Of course, the quality of impeccable integrity at management level is necessary. In fact, at any level, an individual as a human being should have an impeccable integrity. कि जब उसे कोई नहीं भी देख रहा है ना, तो भी वो अपना काम सही तरीके से करता है. That is the thing we need. Founders must adhere to highest level of corporate governance. Of course, robust regulation system should be there. It will only happen when there is a non-corrupt government and a non-corrupt officers in the government, and there is not a hand-in-glove relation or nexus between the corporates and the private sector. Also, now with the budding economy, startups are a new thing, a new age phenomenon. And startups need to start taking corporate governance seriously. In fact, we will discuss it in the spotlight of the present Bharat Pay controversy. उसमें भी आपने देखा क्या हुआ, अश्नीर ग्रोवर पे उन्होंने इल्जाम लगाए. उन्होंने अश्नीर ग्रोवर जी ने कोटक के एम्प्लॉय को कुछ कह दिया, कोटक और भारत पे के बीच में लड़ाई हो गई, उन्होंने उनको निकाल दिया. नाउ देयर इज अ ह्यूज what ruckus or natak going on everywhere. This kind of thing does not happen. He is the owner of a 20,000 crore company. A certain level of behavior is expected from him, a certain level of humanity is expected from it, and a certain level of intellect is expected out of everybody in that particular sphere. Thus, we'll just quickly conclude and see that according to economic survey 2021-2022, India is the third largest ecosystem for startups in the world, on the heels of US and China, after US and China, of course. And in India also, more than 50% of the startups, if I remember correctly, is from Bangalore itself. There are 61,400 startups in India, 95 of them are unicorn. That is, they have a valuation more than $1 billion. Thus, with the growing economy and we moving towards a more capitalist or
I would not say a more inclusive or a growing economy, we should focus on public governance and corporate governance equally. In fact, I would like to conclude this with a little quote by Mahatma Gandhi ji, that be the change you want to see in the world. आप अपने आप से स्टार्ट करो, आप अपने आप को ठीक रखो, उसके बाद चीजें आपके अराउंड खुद ही ठीक होती चली जाएंगी. तो that will be all for today. On behalf of Alpha, yes, and we shall see you tomorrow. Thank you. Have a nice day. Take care.